गुड मॉर्निंग। जन गण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तिरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जनगण मंगल दायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। थैंक यू वेरी मच। जय भारत, वंदे मातरम, जय भारत का संविधान, जय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जय पीपल ऑफ इंडिया, एंड hope God of Bharat shall help Bharat. This is our country, great Bharat, great India, and I am member of this country. In whatever capacity you be, you are lucky that you got birth into this nation, my nation and your nation, Bharat, India. We are great people, dynamic people if you don't sleep. We are very hardworking people if we work. If we don't waste time, we are a great society. All these calibers, all these potentials we have, and we should be having pride of that. We people of this country, having solemn resolve to constitute Bharat, India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic to secure to its citizens justice, equality, and liberty as defined on our preambles, so that we create brotherhood, fraternity among our people with individual dignity and group dignity, and we move forward to unknown destinations, which destinations are highest one in comparison to all other nations of this world. And this was agreed on 26th November 1949, a great day when our constitution was declared valid and initiated and fully commissioned on 26 January 1950, a day which is known as Republic Day, a great day when we all celebrate our complete freedom, freedom from darkness, freedom from slavery of mind and slavery of body, freedom from all obstacles of life, of course, with dedication to work hard to take this country to higher, farthest locations and highest locations of development and happiness and movement parallel to world. But we have to measure ourselves. Where have we reached? Where did we fail? That is the point. Republic Day and Independence Day, 2 days we celebrate always. 26th January is known as Republic Day, and August 15 is known as Independence Day. Independence Day is more important from point of view of separation, or we exit British masters, rulers. Whereas Republic Day is a day of complete freedom from slavery of rules and rulers who wanted to control us, but we converted those rulers into self-rule by public of this country. Democracy was created differently than other countries do have. And of course, our controlling parameters, one end is sovereign status and other end is republic status, whereas in between is democracy supported by secularism and and socialism. This is what we are today. Facing we are facing trouble by our own people whom we installed, planted into positions of power, and those peoples have forgotten
that they are there not because of their own, but because of lusts and wishes of certain people, masses who had some dreams to be fulfilled, but these dreams have been crushed into powder by same people who are installed, unfortunately. हम लोगों ने, भारत की जनता ने इस देश का संविधान बनाया, इसलिए बनाया कि इस संविधान से हम आगे चलेंगे। अंग्रेजों को भगाया था यहाँ से, अच्छी तरह से भगाया था, शांतिपूर्ण तरीके से। उस भगाने के बाद इसलिए भगाया गया था, इसलिए कहा गया था कि हम स्वयं बैठेंगे। हमने कुछ लोगों को बिठाया इन सीटों पे हमारे देश की संविधान बनाने के बाद, पर वो भूल जाते हैं कि वो स्वयं उस सीट पे नहीं आए हैं, उनको लाया गया है। लोगों की इच्छाओं को पूरी करने के लिए, लोगों की मंजिलें तय कराने के लिए उनको उन सीटों पे लाया गया है, लेकिन वो सब भूल जाते हैं। वो अपने आप को मालिक समझने लगते हैं इस देश का, अपने आप को राजा समझने लगते हैं इस देश का। वो भूल जाते हैं कि ना तो वो मालिक है इस देश के, ना वो राजा है इस देश के, वो इस देश के सेवक है। वो कहते हैं सेवक अपने आप को, लेकिन सेवक होते नहीं हैं। ये दुर्भाग्य है हमारी पब्लिक का कि हम भावना में बह गए, ऐसे लोगों को उन सीटों पे ला बैठाते हैं जिस सीट के लायक वो है ही नहीं, क्योंकि हम नहीं जानते कि लायकता क्या होती है, किसको सीट पे लाना चाहिए, किसको नहीं लाना चाहिए। हम गलत फहमियों के शिकार हो जाते हैं और उनको सीट पे ला बैठाते हैं और फिर बाद में पछताते हैं। ये पछतावा सही है या गलत है, सवाल तो उठेगा। हम ही चुनते हैं, हम ही बनाते हैं और हम ही रोते हैं, क्योंकि वो लोग वास्तव में लोग हैं ही नहीं। अगर वो लोग होते तो ऐसी बातें होती नहीं। परिवार के अंदर कोई बड़ा होता है, हर परिवार के अंदर हेड होता है, जैसे कहा जाता है कि जिसके दिमाग से परिवार चलता है, वो उस तरह के हेड हैं, लेकिन वो मानते नहीं अपने आप को, बिहेवियर में नहीं मानते, उनके कंडक्ट में, बर्ताव में ऐसा वो नहीं जानते, ना जानना चाहते हैं। शक्ति हाथ में आ गई तो समझ लेते हैं वो शक्ति ऊपर से लाई थे। वो भूल जाते हैं शक्ति है ही नहीं। शक्ति वो लोग हैं जिन्होंने शक्ति दी है आपको। पावर ऑफ पीपल लाइज इन हैंड्स ऑफ पावर ऑफ पीपल लाइज इन हैंड्स ऑफ देयर ओन, इट्स नॉट lying in hands of political leaders. Political leaders who are in constitutional positions have forgotten that they are only servants of people and not masters, and not directors. They have to serve according to constitutional wishes of people. These leaders forget very often and too quickly. They must understand that they must serve or else they will be pushed out. They have considered themselves as if they can do anything. They have forgot this country doesn't belong to them exclusively. This country belongs to every citizen of this country, and they are only for time being like ad hoc personalities. Many have come and many have gone, and they are also there temporarily. They cannot stay there forever. अगर वो घमंड में इतने आ जाएं कि हम ही चाहेंगे वो होगा, ऐसा नहीं है। आप जो हैं वही आप कीजिए, अपना काम कीजिए। काम नहीं करेंगे तो पछताना तो आपको भी पड़ेगा। देश का इंस्टीट्यूशंस, देश की संस्थाएं, देश की ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक के लिए होती हैं, नेताओं के लिए नहीं होती हैं। नेता तो हम कहते हैं आपकी इज्जत देने के लिए, वरना नेता तो आप हो ही नहीं। नेता क्योंकि संविधान में नहीं दिया गया है, नेता शब्द को ही नहीं दिया गया, इसलिए कोई नेता नहीं है। ये एक मान सम्मान की बात होती है कि आपको नेता कहते हैं, हो तो आप नौकर ही। नेता तो वो होता है जो देश को लीड करता है, पब्लिक को लीड करता है, सही रास्ते पे लेके जाता है। नेता उसे कहा जाता है। वो कोई भी हो सकता है, छोटे से छोटा भी हो सकता है, बड़े से बड़ा भी हो सकता है। नेता का मतलब जान तो लीजिए। नेता कोई पोस्ट नहीं है। हमारे संविधान में नेता नाम की कोई चीज नहीं है। कहीं कोई नेता नहीं लिखा। पढ़िए संविधान, कहीं भी प्रेमबल में, सारे 395 आर्टिकल्स में कहीं कोई नेता का शब्द मिल जाए तो कहना। ये जबरदस्ती नेता बना देते हैं इनको, जबकि नेता है ही नहीं। नेता हम हैं। हम बता रहे हैं हमें क्या करना है। हम सेल्फ अपने आप के नेता हैं। हम हर नागरिक नेता है यहाँ पर। उसे क्या करना है, उसे किधर जाना है, ये उसको फैसला लेना है। इन नेताओं को जो हम कहते हैं नेता है, उनको नहीं, वो कुछ है ही नहीं। अगर वो कुछ होते तो उनके बारे में लिखा जाता, डिमांड की जाती कि आपके अंदर ये योग्यता होनी चाहिए। उनकी योग्यता नहीं होना अपने आप में प्रमाण है इस बात का कि नेता कोई नहीं हमारे देश में। जबरदस्ती हमने उनको नेता बना दिया, हमारी गलती। खैर, गलती हमने की है तो भुगतना तो हमको पड़ेगा, क्योंकि हमने गलती। किस बात के नेता हैं आप?
नेतागिरी नहीं चलेगी, याद रख लेना। सेवक हो, सेवा कीजिए, आपको उसका पैसा मिलता है, आपको सुविधाएं मिलती हैं। किस्मत वाले हैं आप कि आप नहीं भी पढ़े लिखे हो, नहीं भी कोई एक्सपीरियंस हो, नहीं भी कोई आपके पास विशेषज्ञता हो, फिर भी आपको चुन लिया जाता है कि आप शायद किस्मत लेके आए हैं, अपने शायद किसी कर्मों की लाए होंगे। भावनाओं में मैं बहना नहीं चाहता, लेकिन छोटे से छोटे काम के लिए भी योग्यता फिक्स की जाती है, हर जगह की जाती है। लेकिन आपकी इतनी बड़ी शक्ति देने के लिए भी योग्यता नहीं लिखी गई, ये शायद उस समय गलती हो गई पब्लिक से जब इस संविधान का निर्माण हुआ। वो कैसे हो गई, क्यों हो गई, इसको छोड़िए। शायद हम चाहते थे लोग संभाल लेंगे इस बातों को, वो चाहते होंगे, वो लोग जिन्होंने संविधान लिखा उनके मन में ये बात जन्मी होगी कि भारत के लोग समझदार होंगे, इन बातों को सॉल्व कर लेंगे। लेकिन भारत की जनता ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया और आज पछता रहे हैं। कोई भी आके उन पोस्टों पर बैठ सकता है और जनता भावना में आके उसको वोट दे देती है और हाथ से अपनी शक्ति खो जाती है। इसीलिए आज सब हो रहा है। एक ऐसा व्यक्ति भी जो कुछ ना जानता हो और वो व्यक्ति भी सब कुछ जानते हो, एक ऐसी कंफ्यूज की दुनिया में रह रहे हैं जहाँ कुछ समझ नहीं आता आप क्या करें। एक ही जगह रोशनी भी दिखाई देती है और अंधेरा भी, थोड़ा आगे चल के फिर आगे रोशनी फिर अंधेरा। एक ही जगह कई कई चीजें, कंफ्यूजन तो होगा ही, क्योंकि हमारी कोई नीति नहीं है। हम नेता अपने आप में जरूर है, लेकिन हम नेतागिरी नहीं जानते। हर व्यक्ति नेता है अपने आप में, उसको किधर जाना है ये सोचना होता है। पर सोचते तो ये बात नहीं होती कि हम सोचने का समाज नहीं है। हम सोचते तो बहुत अच्छे होते, लेकिन सोचने के लिए गंभीर होना पड़ता है और गंभीरता ही सोच का जन्म देती है। दोनों चीजें एक साथ हैं, लेकिन हमारी आदत खराब हो जाती है। हम जब अपने आप को, अपनी शक्ति को, अपने कर्म को, अपने विश्वास को इन लोगों के हाथ में दे देते हैं जिनको राजनीति के प्लेयर कहते हैं, राजनीति के गेम कहते हैं करने वाले। राजनीति एक खेल है, ना वह राज है ना वह नीति है। सच तो बात यही है, कोई राज नहीं। राज का मतलब सीक्रेसी होता है, राज का मतलब एक पावर होती है। ना सीक्रेसी है, ना नीति है, ना पावर है, तो किस बात की राजनीति? क्या राज कर रहे हैं आप? राज तो संविधान है, राज तो देश की जनता है। आपको तो उनके कहने के हिसाब से करना है। आप ना तो उनको समझ रहे हैं, ना अपने आप को समझ रहे हैं। हट नहीं चल सकती देश को चलाने में, जिद नहीं चल सकती देश को चलाने में। जिद नुकसान जरूर कर सकती है, हट नुकसान जरूर कर सकता है, नुकसान कर रहा है। जिद आपकी व्यक्तिगत हो सकती है, लेकिन जहां तक देश का सवाल है, देश की समस्याओं को सुलझाने का सवाल है, हट की कोई वैल्यू नहीं, जिद की कोई वैल्यू नहीं। आप अपने घर के लिए हट कर सकते हैं, लेकिन जब 140 करोड़ लोगों के सवाल उठते हैं तो आपकी हट की कोई वैल्यू नहीं। अगर आप हटी रहेंगे, जिद्दी रहेंगे, तो अपना नुकसान करेंगे। जनता तो आपको बदल देगी, क्योंकि जनता को देश का देखना है, आपका नहीं। अगर आप ये सोच के जनता आपकी गुलाम हो चुकी है, आप जैसा कहेंगे वैसे मानेगी, ये आपकी गलत फहमी है, गलत शिकार है, सोच गलत है आपकी। जनता देश की सोचेगी। जनता में 80%, 90% लोग एक से होते हैं, 10, 15, 20% लोग ऐसे होते हैं जो समझ के भी नहीं समझना चाहते। उनका कोई इलाज नहीं कर सकता। आपने भी ऐसे बहुत से लोगों को अपने साथ लगाया हुआ है, लेकिन आप भूल जाएंगे कि वो भी जनता के लोग हैं, आपके वो नहीं है। किसी भी कारणवश वो आपके साथ आज हो सकते हैं, वो किसी भी पर्पस के लिए हो सकते हैं, लेकिन वो आपके कभी नहीं हो सकते। आपकी बात मानी जा सकती है आज के समय में, लेकिन जो लंबे दूरी की बातें होती हैं वो उनकी समझ नहीं आ रही है, इसलिए वो आपका साथ दे रहे हैं। हर देश का वासी चाहता है देश आगे बढ़े, सही चले, इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था को सुधारे, विज्ञान को सुधारे, देश के स्टैंडर्ड्स को सुधारे, लोगों के हर चीज को सुधारे। जब लोग ऐसा चाहते हैं, आप ऐसा चाहने नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि आप उस लेवल के नहीं है जिस लेवल के आपको होना चाहिए। काश हमारे यहां भी संविधान में लिखा होता कि हमें कितना समझदार नेता चाहिए। खाली कहने से, दिमाग सही होना चाहिए, दिमाग खराब नहीं होना चाहिए, इतना कहने से बात नहीं बनती। इसीलिए हमारे नेता ना होके जो कर रहे हैं अभिनेता हो गए, चाहे वो किसी भी तरफ से आए।
हंसी मजाक करना उनकी आदत हो गई है, गप्पे मारना उनकी आदत हो गई है, ऊट पटांग स्टेटमेंट देना उनकी आदत हो गई है। कुछ भी बोल देंगे और एक दिन बाद कह देंगे मेरी बात को गलत समझ लिया गया। बड़ा आसान है, जनता भी चुप हो जाती है। क्या करेगी जनता आखिर? सारे इंसान है, मानव है, कुछ डिजाइन करके गलत बोलते हैं, कुछ जान के गलत बोलते हैं और बोलते जाते हैं। वो सोचते नहीं कि इसका देश में क्या फर्क पड़ेगा, क्या अंतर पड़ेगा। समझदारी की बात होती नहीं। राजनीति शायद इसीलिए कहा जाता है कि वहां कोई नीति ही नहीं है, नीति ही राज है, बजाय कहने की राजनीति है, नीति राज है। राजनीति में देश के बारे में सोचना चाहिए, राज कैसे चलेगा, देश कैसे चलेगा, लोगों को सुविधाएं कैसे दी जाएंगी, किस तरह से आगे बढ़ जाएगा, वो सब होना चाहिए। लेकिन यहाँ उल्टा है, नीति ऐसे जिसमें राज हो, हमारी पॉलिसी ऐसे से पता नहीं क्या होना है, डेफिनेशन लेस पॉलिसी हमारी। यही तो प्रॉब्लम है देश की। किसी से बात कर लीजिए, अगर आपकी बात आपके दिमाग को समझने वाला है, अगर आप राजनीति की बात ना करके कोई और बात करेंगे तो आपकी बात करने में दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जहां नेताओं की बात बीच में आ गई तो वहां लड़ाई झगड़ा शुरू, क्योंकि ऐसा समझ लेते हैं कि ये मेरा नेता है, वो मेरा नेता है, वो उसका नेता है, मैं उसका। ये सब बातें लड़ाई करा देती है, जबकि एक नागरिक को दूसरे नागरिक से कोई लड़ाई नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मतभेद होते हैं, अलग चीज के होते हैं, लेकिन हमारे देश का माहौल, इन देश की पार्टी जिनको हम कहते हैं राजनीतिक पार्टी, इन्होंने ऐसा बना दिया है कि काले बादल हो, दूसरे बादल हो, सब पता नहीं लगता कहाँ बिजलियां चमक रही हैं, कहाँ बरसात हो रही है और कब भूचाल आ जाता है। सब इन राजनीति कही जाने वाली पार्टियों द्वारा, दलों द्वारा, जो ना तो दल है, न राजनीति करना जानते हैं, ना नीति पता है इनको, न दल जरूर है। ये सब एक ऐसी दलदल में खड़े हैं सारे दल, इन्होंने ऐसी दलदल बना दी है देश को कि हर आदमी डूब सकता है। ग्राउंड नहीं है इनके नीचे, ग्राउंड बहुत नीचे है इनसे। देश की जनता इतनी ज्यादा है कि इनको समझ नहीं पाई और इन्होंने गलत रास्ते पे ले जाके हमको डुबो दिया। हम डूब गए पानी में, सांस नहीं आ रहा, क्या करें? निकलना तो बाहर पड़ेगा, सारे तो नहीं डूब सकते। समुद्र इतना बड़ा भी नहीं है कि सबको ले ले, ये भी बात है। मैं अपना घर का नुकसान नहीं करना चाहता तो मैं अपने देश का भी नहीं करना चाहता। मैं मरना भी नहीं चाहता, मैं जीना चाहता हूं। पर जीने के लिए रोटी चाहिए, जीने के लिए कपड़े चाहिए, जीने के लिए दिमाग भी चाहिए, जीने के लिए शक्ति भी चाहिए, सब चाहिए। कौन देगा? आप कहेंगे अपने आप आ जाएगी, नहीं आएगी अपने आप। खाना तो आपको बनाना ही पड़ेगा। बनाने के लिए आपको राशन भी चाहिए, आटा गेहूं भी चाहिए, चावल भी चाहिए, दाल भी चाहिए, सब चाहिए। कहाँ से आएगी? जेब खाली है, काम नहीं है, धंधा नहीं है, कहाँ से लाएंगे? भीख मांगेंगे? भीख भी किससे मांगेंगे? भीख देने वाला भी तो कोई होना चाहिए। ये सब बातें हमारी अर्थव्यवस्था से मिलती हैं और हमें इसका कोई उत्तर नहीं देगा, जिससे आप मांगेंगे मुंह फेर के चल देगा। और यही आज हो रहा है। अगर हमारे देश के जिम्मेदार लोग, जिनको हम गाली देने के नाम पे कह दो कि नेता कहते हैं, नेता अपने आप में एक गाली, ये लोगों के पास जवाब नहीं है आपकी बात का, नहीं दे सकते हैं। ये बातों का जवाब इनमें से कोई भी इतना बड़ा बुद्धिमान नहीं है, जिम्मेदार नहीं है कि आपको जवाब दे देगा। नहीं दे सकते जवाब आपको। आप मांगते रहिए जवाब, ये निकल जाएंगे साइड से, दूसरी बात कह देंगे आपसे। और मैं हर पार्टी के लिए बात कह रहा हूँ, एक के लिए नहीं कह रहा। जवाब इनके पास नहीं है क्योंकि इनकी औकात नहीं है जवाब देने की। हमारी आज की जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं सब एक ही लेवल की हो गई हैं, किसी के पास कोई जवाब नहीं है। आप बात कीजिए कानून बनाने वालों से, सीधे मुंह बात नहीं करेंगे। उनको पता नहीं वो क्या चलना चाहिए, क्या कर रहे हैं, वो जानते नहीं हैं। हो सकता है 2-3% लोग हों उनमें समझदार, लेकिन ज्यादातर वैसे ही हैं। मतलब ये कि वो अपना काम नहीं जानते। उसी प्रकार से आप बात कर लीजिए एग्जीक्यूटिव से, कार्यकारी से, वो भी कुछ नहीं जानते, आपको घुमा देंगे बातों में। इस बात के लिए वो विशेषज्ञ हैं कि आदमी को कैसे बेवकूफ बनाना है वो बना देंगे। और बाकी संस्थाओं में जाइए तो वही हाल आपको मिलेगा, कोई भी संस्थान क्यों ना हो। जब इस संस्थानों की बेड़ा गर्क हो जाए देश का, इसको कहते हैं इंस्टीट्यूशंस, जब संस्थाएं आपकी खराब हो जाएं, संस्थाएं आपकी अच्छी तरह काम ना करें, तो बताइए कैसे चलेगा संविधान, कैसे चलेगा देश, कैसे चलेंगे नियम कानून, कैसे होगी तरक्की? क्या इससे राष्ट्र चल सकता है, ऑर्गेनाइजेशन चल सकती है, सिस्टम चल सकता है? सिस्टम बनाते हैं तो चलाना भी जरूर है।
सिस्टम बनाया जाता है मेहनत करके, समझ के, तजर्बे से, एक्सपीरियंस से, नॉलेज से सिस्टम बनाया जाता है, लेकिन चलाने के लिए भी तो उसमें योग्यता चाहिए। वो योग्यता के लिए ड्राइवर्स हमारे पास नहीं है, चालक नहीं है, हमारे पास वैज्ञानिक नहीं है वैसे वाले, हमारे पास वैसे वाले कार्य करने वाले वर्कर्स नहीं है, तो कौन चलाएगा उसको? अपने आप तो नहीं चलेगा, अपने आप चलेगा कुछ समय चलेगा फिर गिर जाएगा। इसीलिए बहुत सोचना पड़ता है। देश को हमने पाया आजादी करके, लड़ाई करके, लेकिन आज अपने देश को हम खुद तोड़ रहे हैं। जिन जिन लोगों का, वो लोग जो उच्च सीटों पर बैठे हैं, जिनकी उत्तरदायित्व है इस देश को संभालने का, वो दूर भागते हैं जिम्मेदारी से। वो अपने लोगों को, जिन्होंने उनको उन सीटों तक किसी भी तरह से पहुंचाया, वो उनको उत्तर देने के लिए आज नहीं है। ना तो कोई सांसद उत्तर देने को रेडी है। इतने सारे सांसद हमारे पास, 800 के आसपास, लेकिन उत्तर कोई नहीं देता, प्रश्न कोई नहीं लेता। और वही हाल हमारी एग्जीक्यूटिव कार्यकारी की है। कोई सही तरह से जवाब नहीं देना चाहता, ना कोई उत्तरदायी जिम्मेदारी लेना चाहता है। और बाकी भी वही बात है, किसी भी संस्थान में आप जाइए, कोई उत्तर नहीं देगा आपको। फिर हम क्या करें इन लोगों का? देश इतना खर्चा किस लिए करता है? इतनी सारी संस्थानें हैं हमारी, इतने खर्चे हमारे होते हैं बजट से, टैक्सेस से, उनके ऊपर किस लिए होते हैं? क्या हमारा पैसा पसीने के द्वारा कमाया हुआ, ईमानदारी से कमाया हुआ, मेहनत से कमाया हुआ, इसलिए कि उनके ऊपर खर्चते जाएं और कोई उसका उत्तर ना आए? किस लिए आखिर हम खर्चते हैं? इनकी आवश्यकता क्या है? क्या बात सोचने की नहीं है? हमारे 800 एमपीओ का रोल क्या है, ये बात सोचने की नहीं है? अगर पब्लिक चिल्ला रही है, पब्लिक किसी बात को नहीं मान रही है, उनसे कोई बात करने की शक्ति भी किसी में नहीं है, तो ऐसे लोगों हम क्या करेंगे? वो किसी भी लेवल के लोग क्या ना हो, सबकी जिम्मेदारी है। हम ये नहीं कहते खाली प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति की जिम्मेदारी है, सबकी जिम्मेदारी है। सब लोग वहां पैसे ले रहे हैं, हमारे काम कर रहे हैं, संवैधानिक संस्थाओं में है, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है। हमने इतने सारे एमपी भेजे किस काम के लिए? थोबड़ा दिखाने के लिए, अपना ऐशो आराम के लिए? किस लिए भेजते हैं हम उनको वहां पे? ये प्रश्न हम अपने आप से करना है कि करना चाहिए। आप नहीं करेंगे तो मार खा जाएंगे, लेकिन हम नहीं करते प्रश्न। हम उलझ के रह जाते हैं कि मैं इस पार्टी को सपोर्ट करता हूं या आप उस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, इस आदमी को सपोर्ट करते हैं, उस आदमी को सपोर्ट करते हैं। हमें क्या लेना है उनकी सपोर्ट करने से, ना करने से? मुझे अपने देश के बारे में सोचना है, हमें उनके बारे में क्यों सोचें? मेरा क्या नाता है उनसे? वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, ABCDEFG जो भी हो, मेरा कोई मतलब नहीं उनसे। मेरी दुकान नहीं है वो, मेरा कॉलेज नहीं है वो, मुझे सिखाएंगे नहीं वो, मुझसे बात करेंगे तो करें। अगर सारे देश के लोग, करीब करीब पब्लिक किसी बात से परेशान हो, उनकी बात सुनने वाला कोई ना हो, उनकी बात का मजाक उड़ाया जाए, और साथ में जो शक्तियां हमने उनको दी हैं नियम कानून को रख रखाव के लिए, उन शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया जाए, अपनी हट दिखाई जाए, अपना अधिकार दिया जाए कि हम इनको पकड़ लेंगे, इनको जेल में डाल देंगे। ये सब क्या है? जेल में किसको डाला जाता है? जेल में उसको डाला जाता है जिसे जुर्म किया हो, जिसने कानून तोड़ा हो। अपनी बात को उठाना कोई कानून तोड़ना नहीं है। ये हमारे देश ने हमें अधिकार दिया है, हम इस अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। आप कौन होते हैं? हम आपको जेल में डाल देंगे? हमने पब्लिक को जेल में डालने के लिए आपको वोट दिया था? अब ये बात एक बहुत ऊंची उठ चुकी। हम भारत के संविधान के खिलाफ नहीं जा सकते, क्योंकि हम भारत के संविधान की पूजा करते हैं। हमने स्वयं बनाया है, अपने आप के लिए बनाया है, और जिन्होंने हमें बना के दिया है उनको धन्यवाद करते हैं कि हमें बहुत देर हो गई उनके काम को समझने के लिए। वो नेता जो ऊपर बैठे थे, जिनको नेता कहा जाता है, वो उसको समझते थे और उन्होंने इसका अच्छी तरह से उपयोग भी किया और दुरुपयोग भी किया। लेकिन जब हमारी आंख खुली तो 70 साल बीत चुके थे इस संविधान को बने हुए। देश की जनता बहुत देर बाद जागी, और अभी भी पूरी नहीं जागी। अभी भी कुछ लोग हैं, दिमाग खराब है जिनका, जो समझते नहीं है। व्यक्ति को मानते हैं, पूजा करते हैं, संविधान को नहीं समझते। हम व्यक्ति पूजा करने के लिए नहीं बैठे यहाँ पे। हमें किसी व्यक्ति की पूजा नहीं करनी, हमें देश की पूजा करनी है, संविधान की पूजा करनी है। हमें संविधान के हिसाब से चलना है। यही हमारा ग्रंथ है देश की आजादी का, देश की स्वतंत्रता का, देश के कार्यक्रम का।
हमारे दूसरे ग्रंथ धारों के हमारे अपने घर के लिए हैं, अपने आप के लिए हैं, उससे देश का कोई लेना देना नहीं है। मैं किसकी पूजा करता हूं, किसके प्रेयर करता हूं, किसकी क्या करता हूं, वो मेरा अपना अपना दुनिया है, अपनी दल है, उससे देश का कोई मतलब नहीं। मैं कैसे भगवान से, ऊपर वाले से रिश्ता रखता हूं, मेरी मर्जी, इससे किसी को क्या लेना देना है। लेकिन जहां तक देश का बात है, जनता की बात है, हमारे देश में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो हमें संविधान से ही चलना पड़ेगा। और संविधान ने भी हमारी आंखें नहीं खोली। हम सो गए थे, इतने ज्यादा अंधेरे में सो गए थे कि चलने दो चलने दो चलने दो, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, हो जाएगा। आखिर इंतजार की भी एक सीमा होती है, प्रतीक्षा की भी एक सीमा होती है। हमारी शक्ति को लूटता चाहे, हम लुटाते जाएं, और हमने लुटाया। मेहनत करें हम, काम करें हम, खून पसीना बहाए हम, और फायदा उठाएं ऊंचे वाले लोग जो पैसे से पैसा कमाते हैं, लूटते हैं देश को और लुटवाते हैं देश को। दोनों तरह के लोग, लूटने वाले वो लोग जिन्हें पैसा है, जो मिसयूज करते हैं पैसे का, और लुटवाने वाले हमारे देश के जिनको हम वोट देते हैं, जिनको हम पैसा देते हैं, मेहनत करके इनकी कमाई कराते हैं, वो भी लूटते हैं, और जिनको वोट देते हैं वो भी लूटते हैं। तो दोनों हाथों से, इस हाथ से भी लुटा रहा हूं, उस हाथ से भी लुटा रहा हूं, और वो लूटे जा रहे हैं और हम पूजा भी कर रहे होंगे। तो हमसे बड़ा दिमाग से कम कौन होगा। अपना पैसा लुटवाते जाओ, अपनी मेहनत लुटवाते जाओ, और इन लोगों की जिंदगियां संवारते जाओ, और फिर ये हमें डंडा मारे। तो मैं तो नहीं समझता कि नागरिक को ऐसा करना चाहिए। अगर नागरिक को ऐसा अच्छा लगता है तो उसकी मर्जी। नागरिक नागरिक होता है, हम प्रजा नहीं है, कोई राजा नहीं है मेरा, मैं हूं राजा स्वयं का। हम भारत के नागरिक, राजा हैं इस देश के। ये चीज हमें समझनी चाहिए। आई कैन नॉट लीव everything to these so-called, though I don't call them political leaders, but people call them political leaders. These peoples have spoiled this country. These people have disregarded Constitution of India for last 7 decades. And I don't respect these leaders in that capacity, because these leaders are not required to stay in that capacity. These leaders are servants to public citizens. These people are required to be known as citizens, servants. They are not leaders, but we call them leaders because there is no such title given in the Constitution of India. They are the leaders of this country. No title exists as leaders of the Constitution. No one is leaders. It is people of India that are leaders of themselves. Every citizen is leader in this country. Constitution clearly states that we people of this country are responsible for this country. Because we are responsible for constitutions, therefore we are responsible for this country. This point we must understand. We should remove this virus from our minds. What we are, what these people are. These people are nothing actually out of our people. They are. We brought them these positions of constitutions. They're enjoying that. We could not reach ourselves because we didn't have a route to go to that place. I have also aspirations to become MP and PM. Everybody has got aspiration. That is only aspiration, and you die without aspiration. You can't get that position, but these people have got certain people only. Why everybody is not thinking that way? Because everybody is not sure about that. My vote, people's vote, and they enjoy. My country, you enjoy. My tax, you enjoy. Why do I allow that? This means certainly there's something wrong somewhere in system. And there's nothing wrong in constitution, nothing wrong in definitions, only some you can say virus, or you may say something else, some dirt or some septic material or rotten material exists somewhere, which place we do not know. Had we known that place, we would have charted out that and thrown out that septic material. But we failed to do. We failed so to do, and therefore we are suffering. But how long can we suffer? We have suffered for 70 years since this constitution was drafted and approved. Still we are suffering. We are suffering because we are not understanding. We are unnecessarily inclined to certain groups, certain parties. We are this required. It's not required at all to incline to whatever party. Why do I incline to this party? After what's the reason? Why should I? I'm not related to this political parties at all. Why should I stick myself to them? It is a question mark to myself, and I to answer what for education exists actually? What's the purpose of my education? My education should teach me. My education should bring up me to a level of thinking from where I can contemplate what I should do. But no, I'm not doing that,
because my education is not liberal. My education is not based on thinking. My education is not based on understanding. My education is based on cramming. Paradox. Just remember this, write an examination, come back, you'll get pass mark. That's my education. That is defective education. Education should open your mind, should open your philosophical angle, should create ways where you can think on. That's called education. If your thinking power is not developed, no purpose education, then it is only certification. I don't need certification. Of course, certification is a requirement, but beyond that you have to go. If you have certification, it must equip you with power that you can develop it further. But if you just stuck yourself, stopped here, you cannot use your education because you actually did not learn that. Just passing marks or degree got no meaning if your mind is not working beyond that. If you keep your mind bound by that educational certificate and you cannot even think further, you do not have an education. This means that education teaches you, it develops your concept, it develops your nerves, your neurons. You must know and understand what you can do, what are merits and demerits in your proposals, what is good for you, for your state, for your nation, or what is bad same way. If you cannot do that, if you cannot use your mind for unlimited study for whole life, do not lock you at one location. If you do that, you cannot move further. This is where we are wrong. Citizens are wrong. There is actually this difference in education. Our system, though it's copied one, yet it's not forced. We have to open mind. Everybody said has to open mind. Our mind should not be swayed by minds of those who don't have minds. You understand what I mean? Minds of public should not be swayed or abused by minds of those people who have either abusive mind or who have negative minds or who have business minds or you don't have minds. And unfortunately, we have been being swayed for 7 decades by those business people in commerce, people in politics who have got benefited, undue benefited from our innocent minds. But now we have to forget all that and we have to divert ourselves to constructive approach, to an approach we have to think for construction, development of this nation, which is now starting. And when you start something new, of course, you have to confront with those who are not happy with that. We have to remember again and again, it's people of this country who are responsible for this country, not constitutional positions. Constitutional positions are lower than people of this country because people of this country in a group, as institution and as well as individual entity are liable to losses and benefits of this country. Country is Bharat, India, a group of 140 crores people are institution actually, and others institutions are contained with these institutions, are encased in this institution of 140 crores people. That must be kept in mind, and people have to be open-minded. People have to be open in brainstorming and reaching decisions based on revelations of brainstorming, and every class of people have to contribute to that. Today, what is happening is very much revolutionary, I can say. It is very much revolutionary what's going on, and it should be like that on every activity. It's limited to something, but question is why it is limited to something. Why we do not question ourselves first? Why we are being abused?
When we are not required to be abused, we are required to be supported by those constitutional positions. But they think they are having powers. Yes, you are having powers, but your power is relative power. That's not absolute power, but public has absolute power. Your power is limited to your discipline. It's limited to institution. It cannot encroach that further. You may be wherever you are, in whatever institution. You are bound by public demand and public mandate. You cannot move beyond that. And you have to serve according to constitution mandate. And if you go beyond that, you have to suffer and respond to people if it is negative answer. No one can protect itself or shield itself just because one is a member of certain institution, because ultimate institution is public. Each citizen and all citizens, that is institution our Bharat has. Every citizen is chartered citizen, constitutional citizen. Remember, if I am citizen, you are citizen, it means we are not private citizens. We are constitutional citizens. We are chartered citizens. You have a charter according to constitution. And that charter is that you have to make this country according to fundamental duties and in relation to your rights, fundamental rights, and your professional work. Your citizenship has got all this. This citizenship is not a word, it's not a paper, it's mandate of your own enshrined in Constitution. Citizenship Act is junior to that. Constitution itself defines citizenship in various articles, and that we know. No need to repeat it. We know it. So I am proud, and you be proud that first of all you are citizen of this nation. That's in itself a great award by this country to everybody. And there's no power, at least in this country, that can challenge my citizenship. No way. If I am citizen, I am citizen. And that's it. That's end. That's period. Do not raise any question, because I am now not sleeping. Citizen is not sleeping. You have to sleep now. Get lost, because I put you on that chair. I, with all other citizens, install you in that chair where you are sitting and ordering me. You cannot order me according to law. I have my fundamental rights as citizen, and I am using those rights to revolutionize this society, to revolutionize this country, to reignite our minds, to reignite our nation to higher spheres, higher levels. We have to redefine everything. We have to redefine democracy, what democracy is. We have to redefine our structures of organizations, what they are. We have to redefine everybody's duty, because we have a fundamental duty of citizen, and that duty of citizenship should be a part of that duty of job description of certain position in constitutional definitions. Fundamental duty is a must, and it's not only for citizens, for all. Everybody in this country got fundamental duties involvement. Fundamental duty is what? As our Honorable Chief Justice spoke in some seminar, that citizen must abide by fundamental duties. Yes, you are right, Honorable CGI Sahib, you are right. Every citizen is bound by constitutional duties, fundamental duties. But what about institutions? What about those who are having positions of constitution? They are also bound by that. Fundamental duty also spreads onto all institutional heads. You have also do that, sir. Did you do that?
Question comes from public. Use your duty to safeguard rights of people, privileges of people. These are to be safeguarded by institution of judiciary. But police is beating them and you are watching. Police is killing them, you are watching. Politicians are asking police to abuse people, to jeopardize their strength, and you are watching. You are not even inclined to take so much of all these positions. All these acts, atrocities are being caused to public, and you are not able to even look at that. You are just blaming without any proof that public is at fault. Public is not disciplined. Public is damaging properties. So without having any judicial note, you are considering its answer, its judgment. My respected sir, first of all, take all these cases suo motu and punish police, punish politicians who are ordering all this. Without doing that, without charting at that level, just saying public at fault. If public is at fault, then what about institutions? Public is at not fault. It is greed of politicians. It's average of politicians. And institutions are under force, under scales of these powerful politicians. Everybody wants to keep safe. Nobody is open in hearts and minds to confront people, to confront government. Is government that powerful? If government is that powerful, it means people should be more powerful. That is a mathematical equation. After all, it's public of this country to whom all institutions must serve. But practically it's not happening. Is public mad that's on road? You think all crores of people are mad? They have gone lunate, they are on roads and demonstrating something peacefully? Rethink, please. It's required to rethink. And if institutions do not rethink, of course, public shall rethink. Public shall rethink. This was 1947, one freedom. Now 2020, I think is going to bring another freedom. And that freedom is constitutional freedom. Opening constitution actually will start now in the 20s, till now it was closed. Now, fortunately, our constitution is going to open and work. And that shall cause problems to many. It shall cause first problems to legislative bodies, because future of legislative bodies is now going to change. Public, of course, when come on road, they would chart out many ways how to redefine and reinstitute all these institutions who have gone astray. Our institutions have gone to some place which is not their place. Public shall define, public shall dictate and mandate which place they have to occupy. Public has suffered a lot, which they were not required to suffer. Public could not understand meaning of secularism so far. Public failed to understand meaning of democracy. Public has forgot meaning of socialism. Now these three characters enshrined within our preambles would be learned very well, would be defined very well. Public shall teach all these so-called leaders what leadership means. They will teach them very well. These leaders shall be taught a lesson by throwing them out of their claimed positions. Public shall replace all this by fresh, gigantic, energetic people, principled people, reliable people in future. Because general public has woken, students have woken up, kids have woken up, and common people have come up. And when common people come up, bridges are thrown out. When common society comes up, landscape of nation changes, architecture of nation changes. Big changes are going to come. When constitution starts, it's true work, not fictitious work. Public shall set everything right.
if it moves what is moving now. People on streets, people on roads, veins, country is going to change drastically. Drastically. No favorism, no ritualism, just application of law, application of mathematics, application of requirement demands, application of answers and forces. Public mind is different. Public mind doesn't support anybody undue. Public is public, and I think it shall bring better results. Better than what is pollution caused by politicians, pollution caused by inefficient institutions, pollution caused by all others. Public is going to set that right, and this will be wonderful for ours, Bharat, India, that if secularism and democracy work together, supported by socialism, this country shall change its complete landscape, and benefit shall go to those who deserve that benefit, and looters shall be stopped, robbers shall be stopped from looting this country. That must happen, and I think that's the only way we can go this way. And stop here, and I would say I'll talk later continuing this topic, and just say Jai Bharat, Dhanyavad.